पीपल, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मोस्ट फेमस डिश ऑफ द रेस्टोरेंट, वो है चिली चिकन। तो चलिए स्टार्ट करें। 700 ग्राम्स बोनलेस क्यूब चिकन, ब्रेस्ट के पीसेस हैं। मैरिनेशन के लिए हम लेंगे हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 एग, 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च, 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस। Let's marinate the chicken. Let's put the black pepper, salt, ginger garlic paste, soy sauce. Let's beat everything together. Let's add our chicken and let's add the corn flour. Mix everything well. Let's keep it aside for 30 minutes. Let's prepare the sauce. For sauces, we will need 2 tablespoons of chili sauce, the red chili sauce. One tablespoon of soy sauce, two tablespoons of tomato sauce, one tablespoon of vinegar, mix everything well. For cornflower slurry, we're gonna take 2 tablespoons of cornflour, yani cornstarch. To make the slurry, we're gonna add 1 cup of water. हमने पैन में ऑयल ले लिया है जिसमें हम हमारी चिकन को डीप फ्राई करेंगे। मेक श्योर करें आपका तेल जो है बहुत ज़्यादा हाई हीट पर गर्म ना हो। बैचेस में आपने इसे फ्राई कर लेना है। थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आप इसे फ्राई करें। आपने इसे फ़ौरन स्टर नहीं करना है। इसे चिकन को एटलीस्ट पैन में 5 to 6 मिनट्स दे दें उसे अच्छे से कुक होने के लिए, उसके बाद आप इसे स्टर करें। चलें अब इसे स्टर कर लेते हैं। सारी चिकन के सारे पीसेस को हम टर्न कर देंगे। मेरी फ्लेम जो है गैस की अभी भी मीडियम पर ही है।
चलिए हमारा लास्ट बैच भी हो चुका है। Pan is preheated. Let's add 3 to 4 tablespoons of oil. Let's add 1 tablespoon of chopped garlic. And this is 2 serrano peppers. जो मेरी बड़ी वाली मिर्च है तो मैंने इसकी स्लिट्स कर ली हैं। आप मिर्च अपने हिसाब से ले लें। फ्राई फॉर अबाउट अ मिनट, 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लें। Let's add a 1/4 cup of green onions. Keep the flame on high. Let's add the mixture of sauce. Let's add the 1/4 cup of water. Now let's add the slurry of your corn flour यानी cornstarch. Give it a mix. इसे जब तक स्टर करें जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाती है। बस ये हमारा सॉस जो है वो थिक हो चुका है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी जो चिकन है हम वो ऐड कर देंगे इसमें। हम इसके ऊपर हमारी जो स्प्रिंग ग्रीन्स है हम वो ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 कप ली है, अब वो ऐड कर दें इसमें। बस इसे मिक्स कर लें और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे सर्व करते हैं और मज़े लेते हैं इसके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। ट्राई करें, कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी एंड प्लीज लीव अ कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी रिक्वेस्ट फॉर एनी रेसिपी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।